Today we'll be starting off with your 4.4 unit, which is cell signaling. हमने last time discuss किया था the whole structure of the cell membrane, how is it made up of, and what are different parts and what are they involved and उनके functions क्या हैं. Cell signaling is an important area of research in modern biology which widened the applications. It is important because it helps to explain how living organisms control and coordinate their bodies. And in this chapter, you will consider a few basic principles of signaling, especially the importance of membranes. Many features of cell signaling are shared between all living organisms. Cell signaling में होता क्या? These are some molecular mechanism in which the cells are going to detect and respond. सिग्नल होता है ये कि डिटेक्ट करें और रिस्पॉन्ड करें, आपको सिग्नल ट्रांसफर होगा. एंड नाउ अब डिटेक्ट क्या चीज करनी है, इट्स गोना बी एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड दिस वुड इंक्लूड द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स एज वेल. सो व्हाट इज सिग्नलिंग? बेसिकली सिग्नलिंग क्या है? गेटिंग एक जगह से दूसरी जगह एक मैसेज पहुंचाना. सिग्नल अच्छे होने का मतलब तेज मैसेज पहुंच रहा है, सिग्नल वीक होने का मतलब कहते हैं ना आहिस्ता मैसेज जा रहा है. सो व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सिग्नलिंग? जो आपको होम्योस्टेसिस करना है, जो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करना है, व्हेन यू वांट टू मेंटेन सर्टेन biological mechanisms in your body and you have to respond to certain changes in order to maintain a constant internal environment inside your body, you have to signal. आपकी signaling अच्छी होनी चाहिए. You have to respond appropriately to the different changes in the stimulus, the different changes in the environment, and this is only made possible by means of signaling pathways which coordinate the activities of cell even if they are large distances apart in the same body. Signaling pathways can be electrical, नर्वस हो या केमिकल हो. अब इलेक्ट्रिकल होंगे तो उनको कहते हैं नर्वस सिस्टम, और अगर वो केमिकल पाथवेज हैं तो हम उसको कहते हैं हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम, जो आप चैप्टर नंबर 15 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर ही पढ़ोगे. They involve a wide range of molecules such as neurotransmitters, hormones, and in this chapter we will concentrate on signaling pathways involving chemicals. So the first part of the pathway typically involves the following three main stages. सबसे पहले एक stimulus आता है which causes the cells to secrete a specific chemical, और उस chemical को हम कहते हैं ligand. ठीक है, ये ligand जो होता है ना, जैसे stimulus आया आपके सेल ने ligand बना दिया, ये ligand जाके बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर. फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइगैंड. ये ग्लूकागॉन जब सिक्रीट होता है ये भी जाकर रिसेप्टर्स के पास लगता है कि यार जल्दी जल्दी जाके जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर दो ग्लूकोज में, क्योंकि ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया. इंसुलिन भी एक लाइगैंड है. इंसुलिन भी जाके जब रिसेप्टर पे लगता है वो क्या कहता है कि यार ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में, उसको आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो. ये सारे डिफरेंट लाइगैंड जो पैंक्रियाज के थ्रू भी आते हैं एंड दे रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल्स. Ligand is transported to the target cells, जिनको हम effectors भी कहते हैं, and these signaling molecules are usually relatively small for easy transport. In the case of hormones, the transport system is mainly the blood system, क्योंकि transports जो chemical coordination होती है वो सारी blood में से ही होती है. The ligand binds to cell surface receptors on the target cell, and the receptors are the protein molecules located in the cell surface membrane. The cell surface receptor is a specific shape and recognizes the ligand. Only the cells with this receptor can recognize the ligand. और specificity यहाँ भी होती है, जैसे you have a specific substrate to a specific enzyme, उस तरह ligand और receptor की भी एक specificity हमेशा होती है. receptor क्या करेगा? It's gonna span the whole membrane. अब ये receptor ना पूरी membrane के इर्द गिर्द span पे होता है. span का मतलब ऊपर से नीचे पता पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस लगा हुआ है. तो इजीली आपका ना मैसेज तो देखो ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वैसे ही पूरी मेम्ब्रेन कवर करके बैठा होता है और एक पूरा एक ब्रिज बना हुआ है जैसे कि. अब ये रिसेप्टर की जब मैसेज पास होगा इट्स गोना चेंज द शेप ऑफ द रिसेप्टर, अलाउइंग इट टू इंटरेक्ट विद द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे. एक से एक में कनेक्ट होता जाएगा सिग्नलिंग पाथवे, कैस्केड पूरा बनेगा. वी कॉल दिस ट्रांसमिशन एज ट्रांसडक्शन. So ligand एक biological molecule है which basically binds specifically to another molecule such as cell surface membrane receptor during cell signaling, or transduction occurs during cell signaling and is the process of converting a signal from one method of transmission to the other. The next component the signaling pathway. अब जब receptor ने एक दफा अपनी change कर ली है shape, उसने आगे भी मैसेज भेज दिया है, अब एक पूरा पाथवे डेवलप हो रहा है थ्रू ट्रांसडक्शन. यहाँ पे एक जी प्रोटीन आती है इस सिग्नलिंग पाथवे में, रास्ते में आएगी जी प्रोटीन विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्विच टू ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ अ सेकंड मैसेंजर. जब यहाँ तक रिस्पॉन्स पहुंचा ना, इस जी प्रोटीन ने एक और मैसेंजर सेकंड रिलीज करना है जो भी आगे डिफ्यूजन के थ्रू आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, रिलेइंग द मैसेज, मतलब कि कनेक्ट टू कनेक्ट करता जाएगा. This switch mechanisms involves the binding to GTP.
यही आगे जाके दोबारा जीटीपी के साथ बाइंड होगा, जिसको हम ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये आगे जाके आपके पास एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल से सेकंड पे थर्ड, और ये आगे 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 जाते जाते ये एक मैसेज आपके पास ट्रांसफर होता जाएगा। ये सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल क्यों बनाना जरूरी था, फर्स्ट ही क्यों नहीं आगे आगे तक जा रहा है? क्योंकि आप ऐसा सोचो कि सिग्नल वीक हो रहा है। जगह जगह आपके जैसे एक शहर के अंदर सिग्नल टावर लगे होते हैं। व्हेन वी हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन टावर्स, दीज कम्युनिकेशन टावर्स क्या करते हैं, एक जगह से जब वीक होने लग जाता है सिग्नल, एकदम से अगला कम्युनिकेशन टावर आ जाता है, वो उसको दोबारा बढ़ा के भेजता है। फिर उस वो वीक 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 हो जाता है, फिर अगला टावर आ चुका होता है शहर में कि वो दोबारा उसको एम्पलीफाई कर देता है। So we keep amplifying the original signal, which is the key feature of signaling. अच्छी सिग्नलिंग वही होती है जो आपके जगह जगह पे ये सिग्नल आया, वीक हो गया वीक हो गया वीक हो गया, दोबारा यहाँ पे जैसे ही सेकेंडरी पे आया फिर स्ट्रांग हुआ, फिर आगे जाएगा वीक होगा वीक होगा, अगला तब तक आ जाएगा वो दोबारा उसको स्ट्रांग कर देगा। तो इस तरह करते 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 आपके एक स्मूथ ट्रांसडक्शन के थ्रू सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी होल सेल, क्योंकि एक के बाद एक एक्टिवेट होते जाते हैं फर्दर एंजाइम्स, and they increase the amplification at each state, and finally the enzymes are produced which bring about the required change in the cell metabolism, जो आपका complete target था। समझ आ गया यहाँ तक? या अब ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ने सारा ट्रिगर करता है जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन इज व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ सिग्नलिंग कैस्केड, एक सीरीज है। 4.6 में एक डायग्राम है ऑफ अ सेल सिग्नलिंग पाथवे, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, विच इन्वॉल्व्स अ सेकेंडरी मैसेंजर एज वेल। यहाँ पे एग्जांपल वो एग्जामिनर आपको देता है ग्लूकागॉन और एड्रिनलिन की। Apart from the secondary messengers, there are three other basic ways in which a receptor can alter the activity of a cell as well. First of all is opening of an ion channel, जो कि आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल हम सारा चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। फिर या तो कोई एक्शन होगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम आके आ जाएगा, वो हम होम्योस्टैसिस में देखेंगे कैसे। या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं और वो पूरा जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन के एंजाइम्स। सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर आल्सो हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, जो कि इजीली मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर जाते हैं। ज्यादातर जो हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स खुद भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ही होता है, तो इसके लिए मेम्ब्रेन क्रॉस करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये डायरेक्टली डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन की जो इनर वाली सरफेस है वो सारी हाइड्रोफोबिक टेल्स ही है ना। दैट सरफेस मेम्ब्रेन कैन ओनली पास्ड बाय व्हाट, द स्टेरॉइड हार्मोन्स उसको पास कर सकते हैं विच आर हाइड्रोफोबिक। उसके अलावा फोर्थ तरीका डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट इज अनदर मैकेनिज्म फॉर सिग्नलिंग एज वेल। जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं, वो फॉरेन एंटीजन के साथ डायरेक्टली बाइंड करके एक मैसेज रिलीज करते हैं कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग करो भाई, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो। ये कैसे होता है? यहाँ पे तो कोई कैस्केड नहीं चला, यहाँ पे तो डायरेक्ट व्हाइट ब्लड सेल आया है आपका, आके डायरेक्ट एंटीजन के ऊपर टच किया, क्योंकि आपके लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी एक क्या था, रिसेप्टर, और आपके एंटीजन्स के ऊपर भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप का था। एंटीजन ये लिम्फोसाइट, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों शेप की, सेल टू सेल रिकग्निशन हुआ, इन्होंने जनरेट कर दिया क्या, इम्यून रिस्पॉन्स। गॉट इट? सो या सिग्नल आया, लाइगेंड आया, लाइगेंड आपके पास प्रोटीन से किया जो कि पूरी स्पैन करी, इसने आगे एक्टिवेट किया जी प्रोटीन को, विच इज गोइंग टू फर्दर एक्टिवेट अ सेकंड मैसेंजर। फिर ये एक और एम्पलीफाइड सिग्नल करेगा, फिर आगे एक और जी प्रोटीन है, फिर ये दोबारा एक सेकेंडरी मैसेंजर एक और मजीद एम्पलीफाई करेगा सिग्नल, तो पूरा करते करते एक स्मूथ ट्रांसडक्शन होती जाती है। ये जो सेकंड मैसेंजर होगा ना, ये बड़े स्मॉल सॉल्युबल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जनरेट कर देता है, ताकि एक तो सिग्नल आसानी से जाए, वो एम्पलीफाई भी हो गया, और आपका इजीली स्प्रेड आउट हो सकता है। एक एक्टिवेटेड एंजाइम कैन एक्टिवेट ऑल दी अदर एंजाइम्स, और कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। वो रिस्पॉन्स किसी चीज की सिक्रीशन भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन सिक्रीशन, किसी चीज की ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ mRNA, कोई मूवमेंट हो सकती है, या कोई मेटाबॉलिक चेंज इन एनी रेस्पिरेशन, या कुछ भी आपके पास हो सकता है। So these are the few of the different signaling pathways that are found in the cells as well. Next, we have movement of substances in and out of the cell, या फिर across the membranes. Can you tell me what are the three methods, या four methods बल्कि? diffusion, osmosis, and facilitated diffusion, last one active transport.
We have diffusion, osmosis, active transport, bulk transport, and facilitated diffusion. We have already seen that a phospholipid bilayer around the cells makes it a very effective barrier, particularly against the movement of water-soluble molecules and ions. Such a barrier prevents the aqueous contents of the cell from escaping as well. तो ये environment के साथ exchange होना बड़ा जरूरी होता है cell का. So 5 basic mechanisms है जो हमने पढ़ने हैं. Diffusion, facilitated diffusion, osmosis, active transport, and bulk transport. Can you tell me a basic difference between all 5 of these? क्या फर्क होता है वैसे? In diffusion, the molecules move from concentration of lower gradient to the higher, higher to lower. Higher to lower G. And in facilitated diffusion, it's the same. But in active transport, they use energy, and in diffusion, they do not use energy. ठीक है. Osmosis. In the osmosis, the water molecules diffuse. बिल्कुल, osmosis सिर्फ water molecules के लिए होता है. And what about active transport? Active transport is for the biological molecules mostly. Good, good. In this video, we're looking at cell signaling. So we're talking about signals being transmitted between cells, and there are quite a few different ways that this could happen. But basically, we're talking about a signaling pathway. So when we get a stimulus, that stimulus will trigger something to happen in a receptor, which then causes a signal to be sent to the effector, and then we get a response. And this bit here, from receptor to effector, is where the message is transmitted, so the signal is transmitted. And this could take place in several different ways. So it could be a hormone, we could have a neurotransmitter, which is how the signal is transmitted to the effector. There could be an electrical impulse, and it could even be cell-to-cell contact. So we see that particularly when an embryo is developing. So in terms of how the signal gets from receptor to effector, again, it could be a very short distance that signal has to travel. It could be long distance, and there could be multiple different components and mechanisms along the route, and different interactions that might take place. So it doesn't just have to be one of these, it could be some sort of combination. The main thing that we're going to look at now is what happens when that signal gets to the cell, because when the signal gets to the cell, we obviously have a cell surface membrane, and that cell surface membrane is a barrier, separates the inside of the cell from the outside, and it obviously controls what goes in. So what happens at that cell surface membrane is quite important. So what you can see here is our phospholipid bilayer, and this is a receptor molecule. When a signaling molecule arrives at the cell, depending on what kind of signaling molecule it is, then a couple of things could happen. So first of all, if a signaling molecule comes in, and if that signaling molecule is lipid based, so it's able to pass through the phospholipid membrane, then it does just that. It's able to just pass straight through the hydrophobic core, and it can go directly into the cell. So any hydrophobic signaling molecule can do that. Steroid hormones are an example, for example, estrogen. However, a lot of signaling molecules that come in are unable to pass through the hydrophobic membrane, and instead they have to bind to a receptor molecule. Now, this receptor molecule here is specific to this signaling molecule. So that means that the signaling molecule is only able to bind to receptors on cells which have that specific receptor. And when the signaling molecule binds to the receptor, it triggers changes inside the cell. So the first thing that happens is that the receptor molecule will change shape in some way, and that change in shape will then trigger the activation of a G protein.
When the G protein is activated, it signals to another protein in the cell surface membrane, which is an enzyme, and the G protein causes that enzyme to make molecules which we call a second messenger. Now what you can see is that we only have one G protein which is activated, but we end up with a lot of second messenger molecules. Okay, so one signaling molecule binds to the receptor, and the G protein then causes a lot of second messenger molecules to be produced, even though only one signaling molecule was there in the first place. So we call this amplification. So the original signal, that original one signaling molecule, has been amplified so that we now have a large number of second messengers. Now these second messengers are also signaling molecules. They're just signaling molecules that are now inside the cell, and they're very small. They spread out throughout the cell, and as they spread throughout the cell, they activate enzymes. And those enzymes then activate other enzymes. And as you can see here, one enzyme molecule is able to obviously activate many other enzyme molecules. So what you get again is more amplification. So each second messenger molecule activates an enzyme which can then activate many other enzymes, which can activate many other enzymes. This whole process is called a signaling cascade. So if you look at it, it's sort of a little bit like a waterfall. One thing happens which then flows down, causes another thing and another thing and another thing. It's a cascade. It's a whole series of events which take place sort of one after the other as a result of an initial event, so the initial activation of that G protein. Eventually, and obviously exactly which enzymes are activated and how many of them are in the signaling cascade will it will change depending on the signaling molecule which bound to the receptor, what that signaling molecule was, but eventually we'll end up with the enzyme causing some kind of response. So that will be some kind of metabolic change which takes place. The response could be the secretion of some sort of substance. It could be a response which leads to the transcription of a particular gene, which then would produce a certain protein in the cell. Some kind of movement might take place, and as I said, the metabolic change. But all of these responses take place as a result of the initial signaling molecule which bound to the protein receptor on the cell surface membrane. So is the cell signaling concept clear? Yeah. Okay. Now we'll start off with diffusion. Let's say अगर आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम करते हो यहाँ पे, थोड़ी देर बाद what is going to happen? The smell is going to spread throughout the room. Because if you open a bottle of perfume in a room, it is not long before the molecules of scent actually spread to all parts of the room. और वो इसी तरह हर जगह membrane receptors के ऊपर भी detect हो रहे होते हैं. This will happen even in still air by the process of diffusion, because diffusion can be defined as the net movement of substance from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration as a result of random motion of its molecules or ions, and the molecules or ions move down a concentration gradient. This random movement is caused by the natural kinetic energy of the molecules or ions, and as a result of diffusion, molecules or ions tend to reach an equilibrium situation where they are evenly spread. So diffusion is basically the net movement of molecules or ions from a region of higher concentration to a region of lower concentration down a concentration gradient as a result of random movement of particles out within a given volume of space. अब ये इजीली आप नॉन लिविंग मटेरियल्स में भी दे सकते हो, जैसे ग्लूकोज और विस्किंग ट्यूबिंग वाली एक्सपेरिमेंट होता है, या फिर एक प्लांट टिश्यू के अंदर आपके पास किस तरह से एक लिक्विड एब्जॉर्ब होके फैल जाता है. Some molecules or ions are also able to pass through the living cell membranes by diffusion. For example, the respiratory gases, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका भी जो एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एल्वियोलाई एंड द नियर बाय कैपिलरीज, उन नियर बाय कैपिलरीज और एल्वियोलाई का भी जो एक्सचेंज होता है वो काफी डायरेक्ट होता है,
कि कैपिलरीज से एल्वेलाई में आपके पास CO2 डिफ्यूज हो जाता है, और साथ ही आपके पास एल्वेलाई टू कैपिलरीज ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा होता है. Now they are also uncharged and non-polar, and so can cause through the phospholipid bilayer between the phospholipid molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर, वो ज्यादा डिफ्यूज करते हैं रैपिडली अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलर बिकॉज दे आर एक्चुअली स्मॉल इनफ एज वेल, तो उनको मेम्ब्रेन वैसे भी नहीं रोक पाती. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक. जो आपके अंदर टेल्स होती है वही बात होगी कि वो कैसे पास करी, बिकॉज जो आपके टेल्स हैं वो सारी hydrophobic होती है. So the rate at which a substance diffuses across a membrane depends on the number of factors, including the steepness of the concentration gradient, temperature, nature of molecules and ions, and surface area. Steepness of concentration gradient का क्या होता है, मैं आपको दो scenarios दूंगा. Now you're going to tell me that. ठीक है, ये एक आपके पास बॉक्स है, यहाँ पे 100 है मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 50 है, जबकि यहाँ पे 300 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 50 हैं. सो कैन यू टेल मी ज्यादा स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है? नीचे वाले में है. क्योंकि एक बड़ा डिफरेंस है, 250 का फर्क आ रहा है यहाँ पे, तो दैट इज नोन एज द स्टीपनेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. The steeper the concentration gradient of a substance across a membrane, the faster would be the rate of diffusion of that particular substance. Because the steepness of the gradient is the difference in the concentration of the substance on the two sides of the membrane. And if there are more molecules of the substance on one side of the membrane than on the other, there will be a net movement of molecules from where there are more to where they are fewer. Notice that it is a net movement. This means that although molecules move in both directions, more will move one way than the other depending on the gradient. Temperature कैसे affect करता है? Simple है कि at high temperatures, molecules and ions are going to have more kinetic energy than at lower temperatures, so they are going to move faster, and the rate of diffusion would also be faster. Nature of molecules and ions में आपके पास आता है size की बात, कि साइज कैसे डिपेंडेंट है. Large molecules require more energy to get them moving than small ones do. So the large molecules tend to diffuse more slowly than small molecules. जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो इजीली गुजर जाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन होती ही आधी से ज्यादा क्या है, हाइड्रोफोबिक. लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो आपके पास उनको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, वो जरा से स्लो आपके पास डिफ्यूज होंगे. सरफेस एरिया अक्रॉस विच डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस भी इजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर वुड बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन. द ग्रेटर द एरिया ऑफ अ सरफेस, द मोर मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन क्रॉस इन इट एट एनी वन मोमेंट, and therefore the faster diffusion can actually occur. The surface area of a cell membrane can be increased by folding, such as आपके पास जो small intestine के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं या फिर वो जो क्रिस्टी होते हैं in mitochondria, which we'll study in your chapter number 12. They also have so many foldings कि उन foldings की वजह से surface area बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. Even अगर हम बात करें, the larger the cell, the smaller would be its surface area in relation to its volume. Volume to surface area ratio actually वो चीज़ होती है. It's not the surface area जिसका relation है diffusion के साथ. इट्स द वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो आपके पास क्या है, वो डिपेंडेंट होती है. जैसे कि ये देखो, ये देखो और ये देखो, यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो देखना जरूरी होता है. Cells rely on diffusion because it is the main method by which molecules move about inside the cells. This results in a limit on the size of cells because the time taken to travel any distance by diffusion increases much more faster than the diffusion does. ये सिर्फ short distance, जितने आपके पास डिस्टेंस शॉर्ट होंगे उतना आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा. लेट्स से अगर फ्यू माइक्रोमीटर्स है, मेम्ब्रेन का जो साइज होता है, थिकनेस, वो कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर, विच इज वेरी लेस. जबकि अगर उसको किसी और यूकैरियोटिक या किसी बड़े सेल में से गुजरना पड़ जाए जो कि 50 माइक्रोमीटर है अक्रॉस अ होल सेल, वो शायद ज्यादा टाइम ले, बिकॉज लार्जर द डिस्टेंस स्लोअर वुड बी द डिफ्यूजन. गॉट इट? Yeah. What is meant by the term facilitated diffusion? Facilitated से क्या मुराद है यहाँ पे with diffusion? It means like it requires some kind of help to like occur. किसी की हेल्प लेना, डिफ्यूजन खुद नहीं हो रही, किसी की हेल्प. Yeah. जैसे हमने कहा ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, जितना ज्यादा साइज ऑफ मॉलिक्यूल का उतना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा टू डिफ्यूज करना. अब जैसे लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, एक तो हैं भी बेचारे पोलर, वैसे ही नहीं गुजर सकते, ऊपर से लार्ज भी हैं. ठीक है, अब जैसे कि हो गए ग्लूकोज, हो गए अमाइनो एसिड, दे कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
and nor can the ions such as the sodium and chloride. So they can only cross the membrane with the help of certain protein molecules. तो इधर आपको डिफ्यूजन होता है, वो हेल्प लेता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. प्रोटीन्स होती हैं दो किस्म की विच आर गोइंग टू फैसिलिटेट द डिफ्यूजन. First is known as the channel proteins and the other are known as the carrier proteins. There are two types of proteins involved, channel and carrier proteins. Each channel or carrier protein is highly specific, allowing only one type of molecular ion to pass through it. ये भी specific है. वाटर की चैनल प्रोटीन्स का नाम जैसे एक्वापोरिन्स होता है, अब वो सिर्फ पानी को ही अलाउ करेंगे. ये एक्वापोरिन्स हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के अंदर, जब पानी की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है. वहां पे अब aquaporins are also channel proteins which are only specific to water. Channel proteins have water-filled pores as part of their structures, and the pores allow charged substances, usually ions, to diffuse through the membrane. Most channel proteins are gated as well, which means that part of the protein molecule उधर surface के अंदर या open करेगा या close करेगा like a gate. This allows the control of ion exchange, यानी कि अन्य वहां अंदर आए जा रहे पानी और आयंस, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा ना. चैनल के अंदर भी गेट्स तो लगे हुए हैं. जैसे एक और टाइप होगी जो सिर्फ सोडियम आयन चैनल्स होंगे, ये हम देखेंगे चैप्टर 15 के अंदर. सो हर आयन हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन है. वाटर के लिए हमने देखा एक्वापोरिन्स होती हैं, फिर सोडियम के लिए वी हैव सोडियम आयन चैनल्स जो हम पढ़ेंगे, एंड एज वेल. So these are the two types of protein that help in facilitated diffusion, including channel protein and carrier protein. Facilitated diffusion क्या है? If you define it, it is the diffusion of a substance through a transport protein in a cell membrane, which allows the protein to provide hydrophilic areas that allow the molecular ion to pass through the membrane, which was otherwise less permeable to it. तो ये उनको permeability दे देता है कि अब आप जा सकते हो. I'll help you in getting permeability, मतलब कि the ability to pass through. Channel proteins are the membrane proteins of fixed shape which has water-filled pores through which selected hydrophilic ions or molecules can pass through by facilitated diffusion or active transport. और carrier protein अपनी shape change कर सकती है, वो हम आगे देखते हैं कैसे. Nervous communication है which is another type that allows exit of potassium ion. तो third type of channels हमने पढ़ ली, potassium ion channels भी होते हैं जो कि recovery phase में हम देखेंगे in your chapter number 15 कि ये आपका refractory period कैसे कॉज करते हैं वंस द एक्शन पोटेंशियल हैज ट्रांसफर्ड द सर्टेन नर्व इंपल्सेस, जिस फेज को हम रीपोलराइजेशन भी कहते हैं. जो सोडियम आयन चैनल्स थे ये कॉज करते हैं डीपोलराइजेशन, जो आपका एक्शन पोटेंशियल कॉज करता है. और पोटेशियम आयन जब ओपन होते हैं दे कॉज द रीपोलराइजेशन एज वेल. सम चैनल्स अकर इन अ सिंगल प्रोटीन, अदर्स आर फॉर्म बाय सेवरल प्रोटीन्स कंबाइंड. सम गेटेड चैनल प्रोटीन्स रिक्वायर एनर्जी टू ऑपरेट द गेट एज वेल. अब कैरियर प्रोटीन कैसे फर्क है? चैनल प्रोटीन की तो एक फिक्स शेप होती है, कैरियर प्रोटीन अप एंड डाउन शेप्स में बदल सकता है. एक तरफ उसकी बाइंडिंग साइट होगी तो दूसरी तरफ उसकी ओपनिंग साइट होगी. मतलब कि आप देखो कि दिस इज व्हाट इज गोना लुक लाइक. यहां से पकड़ेगा, मॉलिक्यूल को बंद किया, अब दूसरी तरफ से खुलेगा. ठीक है, अब दूसरी तरफ से खुलेगा और आयन को अंदर भेज देगा. मेम्ब्रेन ये है, एक तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ से अंदर डाल दिया. मतलब ये देखो दो शेप्स के अंदर वो चेंज होता जा रही है कैरियर प्रोटीन. दिस अलाउज द मॉलिक्यूल टू एक्चुअली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड सम कैरियर प्रोटीन्स चेंज देयर शेप स्पॉन्टेनियसली एज वेल. एक बहुत एक फेमस जो हम पंप पढ़ेंगे आगे काफी ज्यादा चैप्टर्स में, होम्योस्टेसिस के अंदर भी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप. दे आर ऑल्सो द वंस दैट अलाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जैसे कि पंप्स हैं वो एनर्जी भी रिक्वायर करेंगे क्योंकि शेप चेंज करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, विच विल ऑल्सो बी गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हम लेटर आगे भी पढ़ेंगे. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स अगर हम देखें, इफ मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वुड डिपेंड ऑन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, कि हायर किस तरफ है और लोअर किस तरफ है. क्योंकि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में भी बेशक किसी और की हेल्प यूज हुई, लेकिन मूव तो अभी भी हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही करना है किसी भी मॉलिक्यूल में. They move down a concentrated gradient from a higher concentration to a lower concentration. However, the rate at which the facilitated diffusion takes place is also affected by how many channel or the carrier protein molecules there are in the membrane, and in case of channel proteins on whether they are open or not. Carrier proteins पे कैसे डिपेंड करे कि कितनी मौजूद है, और चैनल प्रोटीन्स पे कैसे डिपेंड करे कि अगर मौजूद भी है तो उनमें से खुली कितनी है और बंद कितनी है, गेटेड कितनी है. तो ये चीजें होती हैं. अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट डिपेंड किया जाए तो वो दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले देखा डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन का रेट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? कैन यू टेल मी ऑल दोज 5 फैक्टर्स? क्या क्या थे? Temperature, size and type of the molecule, the surface area, ठीक है, and volume ratio, volume to surface area गुड हो ratio. गया, और डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तीन चीजों पे। ठीक है, पहला कि वो हाई टू लो जो जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टीपनेस कितनी है। दूसरा कि कितनी चैनल प्रोटीन्स अवेलेबल, कितनी चैनल प्रोटीन्स ओपन है या क्लोज्ड है, और कितनी कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। गॉट इट? दोनों में फर्क है। क्लियर? Yeah. गुड जॉब। So can you tell me what is the main difference between diffusion and facilitated diffusion vessel? In diffusion, the substances move on without any carrier or channel proteins. They move from a higher concentration to lower concentration. ठीक है, And in facilitated diffusion, the substances move through carrier proteins or channel proteins from a region of higher to lower concentration. गुड जॉब, बेस्ट हो गया। Diffusion or simple diffusion and facilitated diffusion. So simple diffusion first of all. Simple diffusion is where you have a high concentration of particles in one particular area and a lower concentration in another area, and diffusion just refers to the movement of those particles from the area of high to the area of lower concentration. Now importantly, the particles don't know which way to go, of course, and they actually move randomly. So what we're talking about when we're saying from higher to lower concentration, we're talking about the net movement, the overall movement of particles. It will be in this direction. Now, in terms of biology, when we're talking about diffusion, we're usually talking about the movement into or out of a cell. So in cells, there's a cell surface membrane which separates the inside and the outside environments. So what you can see here is a phospholipid bilayer. So diffusion would happen when particles are able to move through the phospholipid bilayer down the concentration gradient. But that can't always happen. So for example, if you've got a molecule which is big, then molecules can be too big to be able to pass through the phospholipid bilayer. So bigger molecules cannot move into or out of a cell by simple diffusion. The other problem is that the middle part of the phospholipid bilayer is hydrophobic because of the fatty acid tails. And that means that if you have molecules which are hydrophilic, then they won't be able to pass through. So the hydrophobic centre part of the bilayer is non-polar and it's uncharged. So this molecule is able to move through because it's small enough, and it is also uncharged, so it can go straight through. However, if you have a charged molecule, so for example an ion, something like sodium or chloride ions, or even water, because water is polar, then they are not able to move straight through. So if you've got those sorts of molecules, so big molecules or charged and polar molecules, if they can't move through cell surface membrane by simple diffusion, how do they get through? They move through by facilitated diffusion. So if we draw our phospholipid bilayer again, there it is. We'll start off with water. So water is a small molecule, but it's polar, it has a dipole, and therefore water is repelled by the central part of our phospholipid bilayer. So in order to move from one side to the other, water has to move through a channel. And what this is called is an aquaporin. So the purple part here represents a protein. So it's a channel protein. It's a transport protein because water is transported from one side to the other. And it's actually a bit more like this in shape. So again, it's not a proper cylinder, it's not a tube, but this is sort of representative of the idea. So what you've got is a protein with a sort of channel in the middle, and that channel will have in it sort of a watery environment,
very similar to the environment that you've got outside and inside the cell, okay, mostly water. So water is able to move through the central channel of our aquaporin, of our transport protein. Whenever water's in the centre of that aquaporin, it's protected from the hydrophobic fatty acid tails that are around it. The water that's in this channel here are never in contact with the hydrophobic part of the phospholipid bilayer. If you've got something like a sodium ion, it will also move through a transport protein. What you can see here, this transport protein looks slightly different because transport proteins are specific. So aquaporins will let water through, but nothing else. This is a sodium channel and it will let sodium ions through, but nothing else. They have a specific shape. Often, especially when it's ions, these channel proteins are gated. So they will open or close in certain situations, depending on things like, for example, the voltage across the membrane. So at the moment the gate's closed, so sodium ions are not able to pass through. Something could happen which causes the gate to open, and then sodium is able to move through. And because we're talking here about diffusion, then this is showing the movement of sodium ions down the concentration gradient. Other ions would have channel proteins which are specific to them. So for example, this could represent a chloride ion channel. It's a different shape, specific to chloride, but again, it's allowing chloride to move. In this case, it's moving out of the cell down its concentration gradient. So these are all channel proteins. We also have something called a carrier protein. It's very similar, so it's a transport protein which spans the membrane. But this time, when a molecule binds to it, it causes a change in the shape of the protein. So this could represent a glucose molecule. So it tends to be often bigger molecules that use carrier proteins. So you can see that the protein is sort of open on this side of the membrane, so the glucose can bind, but there's nothing here. This side is closed. However, when the glucose binds, it causes a change in shape, and the other side of the carrier protein opens, which will allow the molecule to move through. So it's called a carrier protein because it changes shape and therefore sort of carries across the molecule. Now, all of these are facilitated diffusion. That means that for all of them, substances are moving down the concentration gradient. They are passive, there is no ATP being used, and they use transport proteins. Even with our carrier protein here, which changes shape, it does that passively. It does it just as a result of the binding and the effect that has on the transport protein molecule. There is no ATP used to move a molecule across a transport protein if it's moving by facilitated diffusion. Okay, that's all. Thank you. And that is all for today. कल हम इंशाल्लाह फिर osmosis start करेंगे. Is everything clear today? Meeting time भी over हो Yeah. All right, great.